So good afternoon, everyone. Today is our first class for the Photoshop class, right? So in this course, we will learn two topics: Photoshop and Corel. So we are going to start with the Photoshop software, and I hope all of you have Photoshop software. And if you don't have Photoshop software, so you can bring your Flash. So I will copy the setup for you, so you can install in your computer or laptop Photoshop. Okay. So whenever you open the Photoshop, it will come like this, na? Open. So I'm going to start from beginning. Just a search option I can search. ओपन करते हैं फोटोशॉप. अच्छा, आप सब लोगों ने उस पर काम किया है ना? ऑल ऑफ यू डन वर्क ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then okay, it's similar like MS PowerPoint or Word also. If you know how to operate MS Word, PowerPoint, so you can work on Photoshop also. Okay, it's similar like options. So first we are going to on file and then new option to create a new page. Okay. There's an option for new page. Okay, you're going to create a page, so you can define the size of the page from here. By default we can select A4 size also. A4 size is this. Background, if the background is white, so page will come blank white color. See, like this. Okay, I'm going to again file and the new page. If I'm choosing this option background color, which option? Background color, and then okay, तो क्या होगा? जो भी यहाँ पे कलर होगा बैकग्राउंड कलर, ये इसमें पेज में फिल होके आएगा. ठीक है. If I'm going to select the option transparent, which option? Transparent. So which will come? This transparent page. Nothing is there on the background color. Okay. And you can create Okay. page according to your comfortable also. Like I don't want to create page this A4, A3, A2, A1. Suppose I want to create a visiting card. So the size, or suppose any other thing. So I need a page. All of you aware about the this measurement like inches, centimeter, mm. Is it clear now for all of you? Inches, centimeter, and millimeter. I think all of you know about these Yes, three sir. things. Okay. Yes, sir. Yes. Yeah. So I'm Yes, going to sir. So I'm going to select this page size from like width. I want 3.2. Okay. And going to select the height is 2.15. Okay. Height is 2.15 and width is 3.2 or 3.5. And resolution should be 300. If you're selecting 300 resolution, so it's good. Okay. And always select the RGB mode. Which color you have to select? RGB. If by default you select grayscale, so what will happen? आप यहाँ से color work नहीं करेगा. This color will not work on grayscale. Only shadow color will come, right? Gray colors will come. So it should be RGB color. Sorry, मैंने transparent page कर दिया ना. File new. It should be white background ले लेते हैं, ठीक है? It will easy for us ना to design anything. And this is the menu option. This is the menu. File, edit, image, layer, select option, filter option, view option, windows है, help है, ये सब हमारा menu option है. And this is our toolbox. This is our toolbox. And this is our layer option. If this layer option is not there, so you can go to this option. See, suppose यहाँ पे layer option नहीं होगा तो इसको बंद कर देते हैं. शायद माउस में कुछ प्रॉब्लम कर रहा है. देखते हैं. अच्छा, अगर इसको पेज को तो छोटा करना है, बड़ा करना है, तो यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन. जूम ऑप्शन. प्लस करोगे तो बड़ा हो जाएगा. माइनस पे क्लिक करोगे तो स्मॉल होगा पेज, जितना आप करोगे यहाँ पे. ठीक है. वो ज्यादा बड़ा था इसलिए मैंने पेज को थोड़ा सा छोटा कर लिया. ओके. With the help of this toolbar option, you can do with the same thing Okay, with sir. the keyboard and mouse also.
प्रेस ऑल्ट फ्रॉम द कीबोर्ड. क्या प्रेस करना है? कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करना है एंड यू हैव टू स्क्रॉल द माउस. जो माउस का सेंटर बटन होता है ना, सेंट्रल वाला, उसको अप एंड डाउन स्क्रॉल करोगे तो पेज जूम एंड जूम आउट जूम इन होगा. देखो. Okay. Okay, you have to press alt key from the keyboard and then scroll the mouse. Okay, suppose you want to apply some colors here. Okay, this is two color. This option is called the foreground color. The front color is called the foreground and the another color is the background color. Okay, if you want to fill the color here, suppose you want to apply this background color, so you have to press Ctrl plus backspace from the keyboard. You have to press Ctrl plus backspace. Is it clear? To fill background color, you have to press Ctrl plus backspace. Okay, sir. Okay. Suppose you want to fill this yellow color, right? So you have to press Alt backspace. Alt backspace. Okay. Suppose another color like this. Okay. Alt plus backspace. This color will come. What is the name of this option? Foreground color. Foreground color. Okay. To full foreground color. Alt plus backspace. Clear? Yes, sir. Clear for everyone, na? If any doubt, so please tell me, huh? Yes, sir. Clear. Okay, fine. This is the thing. If you want to fill completely this area, okay, and there's some selection option also like this. Okay, there's a 4 types of selection: rectangular selection, elliptical selection, single row marquee or single column. Suppose I'm using this option, rectangular option. अब ये वाला ऑप्शन लिया और यहाँ से हमने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया. Only this area I select. Okay, change the color red. Now if you want to fill this red color here, so which key? Alt backspace or Control backspace? Alt backspace. Alt backspace. Okay. ठीक है. When you press Alt backspace, so it will come like this color. If you want this foreground color, then bolo. If we want to apply this color, this sky blue color here, so which key we have to press? Alt backspace or Control backspace? Control backspace. Control Control. backspace. Okay. This one. And if you want to remove this selection, if you want to remove the selection, I don't want this selection. So press Control D. क्या press करना है? Control D. Press Control D to remove the selection. Okay, selection will disappear. Is it clear? Yes, sir. Okay. Suppose I want this color should be completely blue. I don't want to apply this color here. तो हमको क्या करना पड़ेगा? Again पूरा select करना पड़ेगा. Same ये color apply करना पड़ेगा, right? और suppose I want to apply this single one color I want to apply here ना. तो काम करते रेड कलर कर लेते हैं पहले इसके ऊपर फिल. And whatever you do changes ना, it will come here. See on the layer option. ये सब layer आपको layer पे आपको show करेगा. And suppose this layer option is not here. Um,
कुछ प्रॉब्लम है इसमें कीबोर्ड अगर यहाँ पे लेयर ऑप्शन नहीं होगा so you can click on the windows option and then you have to click on this layer option so it will come over the screen. Okay. So now see, I want to apply this color here. अच्छा एक चीज और, suppose I want to do some editing and I want, if we don't want to any step, so only that step should be delete, not all. ठीक है. Suppose this is one page, यहाँ पे color white करते हैं. Suppose it's a white page and I apply some drawing here and at the last suppose I don't want anything that option. Suppose यहाँ पे मैंने एक rectangle बनाया, this option. Okay, and apply there red color. Then Control D to remove the selection. To deselect, okay. Control plus D. So press Control D to remove the selection. Now I'm going to here and going to select another option, this, and I want to fill this blue color. Okay, again Control D. I'm going to select this area and going to apply different color. Okay. Now suppose I don't want this circle. ये जो blue वाला circle है मुझे नहीं चाहिए. I want to delete this one. So can I delete? I have to go back, na? Control Z. But Control Z will work only 1 or 2 times, not more than that. Otherwise, you have to press Alt Control Z. Alt Control Z for more than 3 times back. Alt plus Control plus Z to more than 3 times back. Okay. Or you can say undo. लेकिन वो भी चला गया. That green color का rectangle था वो भी disappear हो गया, right? Yes, sir. Control Shift Z to bring again back all the things. There's another way to work to do this editing. Okay, whenever you do work, na, you have to create a new layer every time. You have to create a new layer every time. So now see, I'm going to create a new page again. Okay, same file I create here. Now I want to make this red color rectangle, right? So before create a red color rectangle, I will create click here on the create a new layer option. The name of this option is the create a new layer. Create a new layer. Just click here and select this area. Double click here. Choose a color, red color. Then now press Control D to remove the selection. Now again click here, create a new layer. Okay, layer 2. Now this circle. So going to here, select this and apply this color. And okay. Now again to create one more layer. Okay, from here. Then again going to click here, rectangular option, selecting this and apply this green color. And then click on this option, move tool. Okay. Now see, suppose I don't want this green color rectangle, so I can hide this. And whenever I want, I can bring it again back. You just click on this eye, so it will hide. And if you don't want to be on this page, this option, so just यहाँ पे click करो and then click on this delete option. Then simply click on the delete layer. Simply click on the delete layer. तो वहां से वो delete हो जाएगा. Simple. ये नहीं चाहिए तो ये भी delete हो जाएगा. No need to go back. Press Control Z, Control Z, Control Z. पूरा अंडा हो जाएगा वो image, पूरा फिर वो blank पहले सा हो जाएगा ना. तो it's better whenever you do any kind of editing,
always create a new layer on the Photoshop. Okay, तो अगर आपको कोई चीज चेंजेस करना होगा, कुछ अगर आपको स्टेप अच्छा नहीं लगा, if suppose you don't like any step, so you can delete only that step only from the layer option, like this. Is it clear? Hello, is it Yes, clear sir. for everyone? Okay. Yes. Yes, sir. Okay, I'm going Yes, to sir. yeah, but please don't forget to create a new layer every time. Like again, it's a new page, only background is there, nothing is there. Okay, so I'm going to create a new layer here. Then Control D, again create a new layer, और एक और यहाँ से रेक्टेंगल बना देते हैं, ओ सॉरी सर्कल बना देते हैं. Black color is okay. How to Yes. remove the selection? Control D. Control D, very good. Okay, and suppose I want one more circle like this, elliptical. So how? We can copy the layer. We can copy the Control C. we can copy the layer also. How? Press Control plus J. Control plus J. Control plus J to duplicate the layer or copy the layer. Okay. But you have to click on this ना. इसको press किया. कहाँ पे click किया हमने? Layer 2 यहाँ पे. And then press Control plus J from the keyboard. तो क्या हो जाएगा? एक layer copy हो गया देखो. One more is layer ना here. Can you see all of you here? Layer 1, layer 2, and layer 2 copy, right? Yes, sir. Yes, sir. Then click on this option, move tool, and इसको click करके ऐसे यहाँ पे लेके आओ. ठीक है? Now again click here and make a new layer. I just create one new layer again here. Going to again select this option. और यहाँ से एक छोटा सा सिलेक्शन करते हैं और व्हाइट कलर करना है. So what should I have to press? Control backspace or Alt backspace? Control backspace. Control backspace. And to remove the selection, Control plus D. Control plus D. D for Delhi. Okay. Then click on this option. Select this layer. And now I want one more like this. क्या करना पड़ेगा? New layer. New layer. I need one more circle like this. Control plus J. plus J. Control plus Control plus D. Control plus J to copy the layer. It's copy, right? Done. Now create a new layer again. Now one more layer. And then again Control J to copy the layer. Now any of the step you don't want, so you can delete or hide also. जो भी आपको नहीं चाहिए यहाँ से आप delete कर सकते हो. ठीक है? The complete layer. No need to delete all the image. ये सारा बैक पे करना पड़ेगा. जो भी आपको इसमें से नहीं पसंद है, whatever you don't like, so you can delete. Or suppose you want to change this color. You want to change this color. Which color? This black color. I don't want here black color. Or suppose I don't want here should be this green color. तो एक बार यहाँ पे क्लिक करो लेयर पे, layer 1 जहाँ पे आपने इसको ड्रॉ किया है. Okay, the layer 1 on which you draw this big circle. Then click here, move tool. Okay, then press Control from the keyboard. क्या press करना है? Control from the keyboard. Press Control from the keyboard and click on this layer. Then click on the layer. Control press करो keyboard से, press the Control from the keyboard and press and for the mouse click here on this layer option. तो क्या होगा? ये पूरा selection हो जाएगा. देखो, it's complete selected, right? Now go here and then use another color.
Control D. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Fine. So this is only selection, okay? But whenever you click on this option, now you can see there's a 4 types of option coming. When you click on here, जब भी आप यहाँ पे click करोगे यहाँ पे 4 options आएगा. Name of this option, new selection. Name of this option, add to selection. The third option is the subtract from the selection. Fourth option is the intersect with the selection. Okay, इसका डिफरेंस देखो क्या होता है. एक फाइल पे चलते हैं, न्यू पेज लेते हैं. एक न्यू ले लिया, यहाँ से क्रिएट किया. सपोज आई एम क्रिएटिंग वन सर्कल हेयर. ठीक है, ये सिलेक्शन किया विद दिस ऑप्शन. कौन सा ऑप्शन से? फर्स्ट वाला ऑप्शन से. एंड बिफोर अप्लाइंग एनी कलर आई एम गोइंग टू सेलेक्ट अनदर एरिया. तो क्या होगा, वो पहला वाला सिलेक्शन रिमूव हो गया, राइट? बिकॉज द नेम ऑफ दिस ऑप्शन इज द न्यू सिलेक्शन. इट डजंट केयर कि आपने पहले क्या सिलेक्शन किया. व्हेनेवर यू अप्लाई दिस ऑप्शन, तो एक नया अलग सिलेक्शन करेगा. ठीक है, बट इफ यू आर गोइंग टू क्लिक दिस ऑप्शन, व्हिच ऑप्शन? ऐड टू सिलेक्शन. ऐड टू सिलेक्शन, तो क्या होगा, ये आपने सेलेक्ट किया और साथ में मैं यहाँ पे इतना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ. तो क्या होगा, ये भी ऐड हो गया साथ में. देखो, दिस एरिया इज आल्सो ऐड, राइट? Yes, sir. अगेन आई एम गोइंग टू यूज दिस सेकंड ऑप्शन, ऐड टू सिलेक्शन. यहाँ पे इतना एरिया सेलेक्ट किया, देखो फिर ये ऐड हो गया. एंड द नेम ऑफ दिस ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, इसका मतलब क्या है? सब्ट्रैक्ट. व्हाट इज द ऑप्शन? सब्ट्रैक्ट. जस्ट क्लिक ऑन द सब्ट्रैक्ट ऑप्शन और ट्राई करते हैं. देखो इससे क्या होगा. ये सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन लिया और यहाँ से इतना ये सेलेक्ट किया. जितना आप सेलेक्ट करोगे वो माइनस हो जाएगा उसके अंदर से. कितना यहाँ से क्या हो गया, वो माइनस हो गया. देन यू कैन अप्लाई कलर. ओके, एक नया लेयर बनाता हूँ. आई डोंट वांट दिस, सो मैंने इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ. ठीक है, आई डोंट वांट, डिलीट हो गया. नाउ क्लिक ऑन दिस लेयर. यहाँ से एक सिलेक्शन करते हैं. सपोज फर्स्ट ऑप्शन लेके ये एक सिलेक्शन किया, राइट? अब यहाँ से हम क्या करेंगे? सब थर्ड ऑप्शन, विच ऑप्शन? सब्ट्रैक्ट. क्या है? सब्ट्रैक्ट. ये ऑप्शन लिया और यहाँ से मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ. तो क्या हो गया, सिर्फ इतना एरिया बच गया ना इसके अंदर से. नाउ यू कैन फिल कलर हियर. Control D. You just click on the background, double click here, apply the black color. Layer 2. लेयर 2 पे क्लिक करके इसको मूव करना होगा, तो हमेशा यहाँ वाला ऑप्शन पे क्लिक होना चाहिए, मूव टूल पे. इससे मूव कर सकते हो. ओके, इफ यू वांट टू रीसाइज, कंट्रोल प्लस टी. साइज के लिए क्या है? कंट्रोल प्लस टी. कंट्रोल प्लस टी से आप साइज को छोटा बड़ा जैसा जैसा करना चाहो कर सकते हो. इसको रोटेट भी कर सकते हो ऐसे करके. कंट्रोल प्रेस करो और यहाँ लेयर पे क्लिक करो. आई वांट दिस शुड बी व्हाइट. सेलेक्ट करके व्हाइट कलर सेलेक्ट करो और अप्लाई कर दो. कंट्रोल टी प्रेस करो, इसको ऐसे. ठीक है, और ज्यादा कुछ मत करना. यूज ओनली दिस ऑप्शन. सिलेक्शन टूल यूज करना. सिलेक्शन टूल के अंदर ये सारा ऑप्शन यूज करना आप लोगों को. कौन सा? न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और ये इंटरसेक्ट वाला. ठीक है, इंटरसेक्ट वाला हमने ट्राई नहीं किया ना शायद. एक मिनट बताता हूँ इसको क्या है. सपोज आई सेलेक्ट दिस एरिया. ठीक है, और फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है? इंटरसेक्ट. इससे क्या होगा? whatever is common between the two selection. ठीक है, ये दोनों सिलेक्शन के बीच में जो कॉमन होगा, इट विल रिमेन.
Like if I'm going to select this, so which area will remain? The middle part, this one. This is the intersect option. ये हम बाद में जब इमेज में कोई एडिटिंग करेंगे तब हम इसका यूज करेंगे बाद में. Today you just you have to use only this option tool, this selection tools. Okay, move tool और ये वाला ऑप्शन यूज करना and apply some colors and make some cartoons or some shapes. ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना, सिंपली इतना ही करना है. सिर्फ ये वाला टूल प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं. ये वाला प्रैक्टिस मत करना, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज yourself also or others also. We will learn one by one all the steps. ठीक है, because within one Okay, day sir. we can, because within one day we cannot learn all the complete Photoshop. Okay, and all the students are not same, so if I try to teach everything in a one day, so maybe they some of the students will confuse also, huh? So to make Yes, balance sir. we have to go slowly na, at the beginning, then after that we will go fast also. ठीक है, so is there any problem till now? अभी आप लोगों ने जितना किया इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. Please. No, sir, sir. it's clear. Okay, thank you. So do practice from this No, sir. option. Thank you. Okay, practice only for this tool, this marquee tool option. Okay, इसमें जो 4 ऑप्शन है ये सब देख लेना, सिलेक्शन कैसे हो रहा है, और ये वाला ऑप्शन यूज करना. एंड ऑल्ट बैक स्पेस, control backspace for the background color, this background color, and foreground color, press alt backspace. To remove the selection, control plus D, and more than 3 times if you want to go back, so then you have to press control plus alt control plus Z, because if you press control Z only 2 times it will work, not more than it. Okay, and if you want to copy a layer, so you have to press control plus J, control plus J to copy the layer, or you can say duplicate the layer. And if you want to change the size, then you have to press control plus T. Okay, like this red color circle na, I want to change the size, so I have to press control plus T, T for telephone. इसको प्रेस किया, इससे आप छोटा बड़ा कर सकते हो ऐसे करके. ठीक है, और आपने यहाँ से जो भी लेयर सेलेक्ट होगा सिर्फ वही चेंजेस होगा, दूसरा लेयर चेंज नहीं होगा. सपोज हमने इस पे ये वाला लेयर सेलेक्ट किया तो ओनली दिस विल मूव, नॉट दिस. If I select this layer, so it will move. ठीक है, clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so Yes, sir. I think it's enough for today. Do practice from this option. If any problem, so you can tell me, huh? And I will record this video. It's already recorded, so I will try to upload this on Facebook page also. Okay, sir. Okay, thank you. And I will try to share this Okay, video on WhatsApp sir. also, if it's possible, huh? Okay, Okay, sir. sir. Thank you.